हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गेडी ऑन व्हील्स। एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि एक से ज़्यादा नाव में सवार होने से डूब जाते हैं। पर आज गेड़ी मारते मारते मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने आया हूँ जो एक से ज़्यादा नाव में सवार तो है ही है, बल्कि उन नाव को, जितनी भी नाव है, उन सब नाव को सक्सेसफुली ड्राइव भी कर रही हैं और तैर भी रही हैं और बहुत सक्सेसफुली आगे भी बढ़ रही हैं। So friends, let's go ahead and meet Jhumaa Dutta, who is a multi-talented और I would say एक ऐसी पर्सनालिटी जो कई नावों में सवार हैं और उन नावों को सक्सेसफुली चला भी रही हैं। तो Jhumaa, जैसा कि आपने बताया था कि पैशन कम्स विद इंटेंशन, the right intention. So is that the right thought or the right sentence? Absolutely, Abhishek. It is the intention. If you have the right intention, things will always follow. For me, I always wanted to help people. And that's always has been my intention, and that is why you see where I am today, apart from my corporate job. Great. So friends, before we go ahead and proceed with the conversation, I just want to let you guys know that Jhumaa Dutta is a great senior leader into corporate world. I will not name the organization, but along with that, she's a tarot card reader. Along with that, she's a numerologist. So Jhumaa, ये सारे profession और ये सारे इंटेंशन, ये सारे पैशन आप कैसे ड्राइव कर रही हैं? आई डोंट नो. I think it's all about balancing, Abhishek. You know, if you have the right intention, if you really want to do something, you will find time for yourself. And if that calls in for reading or studying at night, 2 o'clock, you will do it, right? Because you really want to achieve it. Okay, so Jhumaa, जैसा कि as you rightly said that if you have the right intention, you can actually find out time. But guys, corporate world is a world wherein I have heard that आदमी को टाइम नहीं मिलता। सुबह से नौकरी शुरू होती है और रात को थक-हार पे बिस्तर पे बस नींद याद आती है। तो when you are into corporate world, आप 2 बजे टाइम निकालते हो, 3 बजे निकालते हो, तो how do you take out time for this I would say numerology tarot card reader? Abhishek, you know, I always wanted to help people. That has always been my passion and intention as well. And numerology does give me that opportunity to help people. Since I wanted to do that, yes, you are absolutely right, corporate world, long hours, but you know, at the day end, if you really want to do something, you will always find time for it. And for me, being a woman, managing home, managing corporate world, after that I would sit down and I would read, study at 2 o'clock in the night. My weekends would go because I really wanted to do this. Great. So पता नहीं गाइस आपने सुना कि नहीं सुना, बट मैंने ध्यान दिया एक वर्ड स्टडी। सो न्यूमेरोलॉजी नंबर, गेम ऑफ नंबर्स। तो मुझे हमेशा से यही लगता था कि अगर आपको ये पता है एक नंबर क्या होता है, 2 नंबर, 3 नंबर, देन यू आर अ न्यूमेरोलॉजिस्ट। किसी ने पूछा नंबर 1 ये, नंबर 5, बट Jhumaa, you said study. Is it something like a deep study or just? It is indeed a deep study, Abhishek. Of course, you are right. Numbers, each number is related to a planet. There are lots and lots of materials which are available in Google, but that doesn't suffice. It's a whole certification process which allows you to practice and help people. So I went through that entire journey before I started doing the practice. Great. So I really appreciate and respect the entire journey. But moving ahead, अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने मेरी कुंडली देखकर बताया कि अभिषेक, आपके ग्रह में ये है, आपके ग्रह में ये है। तो is numerology similar to astrology? Is it the same? So numerology and astrology are a branch of one universe. It's like a doctor. A doctor can be a surgeon and also a medicine. So it's a similar thing. But they do go hand in hand for sure. तो आपका नंबर क्या है अभिषेक? That's a great question. So I am number 4. Number 4 means is it 4 or is it 1 plus 3 4? 1 plus 3, क्योंकि थोड़ी सी न्यूमेरोलॉजी मैंने भी पढ़ी थी, तो I know how you ask numbers, so इसीलिए मैंने बताया 4 is 3 plus 1 4. That's very nice. So आप ना है नंबर 4. हाँ जी. बहुत अच्छी बात है, इस साल तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 6 का साल है, year 2022, which is 6. Great. And of course you are number 4. So आपका 6 and 4 का combination इस साल तो आपके लिए बहुत अच्छा जाना चाहिए अभिषेक, and that's probably the reason why we are sitting here together. Could be. That's really great to know. Okay, so I want to test something. So guys, if you have a 4 number or I'll ask a few questions about 4 number and other numbers. देखते हैं बिल्कुल सही जाता है prediction या I would say निशाना सही जाता है या नहीं। नंबर 4 के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बताइए आप, 2-3 बातें।
पहली बात तो ये है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है जो किसी और के साथ नहीं हो सकता है. Do you agree with that? I bang on agree with that. आप घर से काफ़ी दूर तक रहेंगे, मतलब away from home many a times. When I say home, maybe your mother, your sister, they may be somewhere else, and families could be somewhere else. So there is a lot of, separation from the family for a certain period of time. ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट फैक्ट गाइस. एंड जो भी लोग अभी गेडी ऑन व्हील्स का एपिसोड देख रहे हैं और 4 नंबर हैं, सो गाइस जस्ट बी केयरफुल, अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, कुछ भी हो सकता है एज पर झूमा, राइट? दैट इज ट्रू, कुछ भी हो सकता है गाइस, जस्ट बी केयरफुल. सो दैट्स अबाउट नंबर 4. झूमा, आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर 1 है. नंबर 1 मैं सन. So I am the creator, as you know. Surya is the creator of the world. So we give light to the people, and so am I. But you know what, Abhishek? 1 and 4 makes a lot of good from, bonding together. And the reason why I say so, number 4 are the big solution maker. जिसका solution किसी और के पास नहीं होगा, वो नंबर 4 के पास होगा, ठीक है? उसको जुगाड़ू भी कहते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज में. तो नंबर 1 को जब भी कुछ प्रॉब्लम में आते हैं और उनको कोई सोल्यूशन चाहिए होता है, दे विल ऑलवेज गो टू नंबर 4, अभिषेक, क्योंकि वो उसको जुगाड़ू भी कहते हैं अभिषेक. सो फ्रेंड्स, जो भी गेडी ऑन व्हील्स का एपिसोड अभी देख रहे हैं, आप 4 नंबर ही हैं तो आप जुगाड़ू भी हैं. जुगाड़ू से मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत जुगाड़ करेंगे, बट you are the solution makers, right? Yes, absolutely. Solution architect could be a great profile for number 4, guys. Great. सो गाइस, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जान रहे हैं कि कौन से नंबर में कौन सी प्रोफाइल भी फिट बैठ सकती है या कौन सा प्रोफेशन भी फिट बैठ सकता है. सो Jhumaa हैज गॉट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, आई वुड से, इफ इट कम्स टू न्यूमेरोलॉजी. बट एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है, एज यू सेड दैट यू ऑलवेज वांटेड टू हेल्प पीपल एंड दैट्स हाउ यू केम इनटू दिस प्रोफेशन. बट हर एक प्रोफेशन के अंदर आने के लिए, बिकॉज आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई थिंक आपने काफ़ी साल निकाल लिए होंगे, तो इतने सालों बाद आपने न्यूमेरोलॉजी में जो स्टेप रखा, what was the reason behind that? So for sure, Abhishek, I didn't want to continue with business consulting. You rightly said 20-25 years of work experience. I can jolly well get into the business consulting. For sure, that was not my intention. And as I mentioned, I really wanted to help people. And to test on, I tested it on myself. Can I become a numerologist? Because always, from my childhood, though I was not a numerologist, but I would always follow the numbers. अच्छा, ये नंबर ये है, ये नंबर क्या मेरे बर्थ नंबर के साथ जाता है कि नहीं जाता है, तो वो चीज़ मेरे साथ शुरू से रही है. Probably that is the reason why I am a numerologist today, because I thought in my mind that I can test myself. And now coming back to numerology, I did check before I started doing my studies and everything, can I do it or not? And the best experience is I experienced it with myself by changing my name number. And wow. I'm sure you have seen many times that I have been changing the numbers. So for me, numerology is all about intentions. What do you want to achieve in life? And based on that, you can always play with the numbers. Great. Play with the numbers, guys. ये बहुत important चीज़ है. तो Jhumaa, while playing with the numbers, हर साइंटिस्ट जब भी कोई दवाई बनाता है तो कहीं पहले टेस्ट करता है, राइट? तो आप जब ये सॉल्यूशंस निकालते हैं तो आप सबसे पहले किस पर टेस्ट करते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं हूँ और उसके बाद मेरा पति. वो बेचारा गिनी पिग बैठता है फॉर माई ऑल एक्सपीरियंसेस एंड द सॉल्यूशंस, फ्रैंकली स्पीकिंग. And when he says, yeah, it is benefiting, then oh, that means it works. And of course, with time, we have friends and families. I've been doing that. And when person comes back and tells me, Jhumaa, you really know it worked. And that's the satisfaction that I get, that yes, it is helping people. And yes, that's worked for them. And that's something that works too, very well for me, for my own satisfaction. So guys, as Jhumaa stated, that the greatest motivation towards numerology and that pushes you, और जो कहते हैं कि what gives you a kick, yep, is people coming back and saying कि yes, Jhumaa, it worked. तो one last question that I have is, जो मैंने शुरू किया था उसी पे ख़त्म करूँगा कि आप काफ़ी सारी नाव एक साथ चला रही हैं. तो what is your long term plan
as in you want to be in all the boats at the same time? आपका न्यूमेरोलॉजी के लेकर लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? Do you want to make it as a profession, earning profession, or what? So my motivation is to help people, and as I said, I always like to help people. And if I can bring a positive change in somebody's life, I want to continue to that. Earning money तो हो जाता है अभिषेक, जिंदगी में पैसे तो बहुत कमा लिए और कमाएंगे भी, लेकिन इंटेंशन होनी चाहिए सही माने में किसी की मदद करना. And I think I want to choose that path. Of course, there are a lot of numerologists and there's a lot of money, as you mentioned. Yes. But my intention is definitely help people and see them rise in their career or in their health life or in their mental strength, anything where I can help and bring a positive change. That's how I continue to juggle, is the word, between the corporate life, home life and the numerology. तो झूमा से बात करते हुए फ्रेंड्स आई ऑब्जर्व कि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैचूज एंड स्टफ अराउंड अस. तो अगर आपने भी ऑब्जर्व करा हो तो देखा होगा अलग अलग झूमा के घर पे स्टैचूज हैं बुद्धा की. और सबसे जो मेरे को अच्छी चीज़ लगी और जिस पे मेरा ध्यान गया वो था ये पत्थर वाला लैम्प. एंड आई एम श्योर जो एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमेरोलॉजिस्ट होते हैं उनके घर पे हर चीज़ का एक मीनिंग होता है. तो आइए झूमा से पूछते हैं, झूमा इस पत्थर का कुछ ना कुछ मतलब तो होगा. That's right, Abhishek. It's a salt lamp, rock salt lamp, and it is stated that if you are keeping this in a house throughout the day and night and keep it, lightning, it removes all the negativity from your house and from the families, and that is why you see me always keeping it on to ensure that the positivities are coming in and negativities are going out. Great, thank you so much. So guys, please, ये पत्थर का मतलब है all negativity is going out and positivity is coming in. So I wish the same, Jhumaa. May all the positivities come in your life and negativity is going off. But before we sign off, या फिर हम गेडी ऑन व्हील्स की गाड़ी आगे बढ़ाएं, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लाइफ का आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको हमेशा से याद रहेगा, या फिर कुछ ऐसी चीज जो आपके दिमाग में है आज भी या थी जो शेयर करना चाहेंगे आप? I always wanted to be on, channels. So here I am as a numerologist, but I really didn't know that I would be a numerologist to be in this channel, because for me it is easy to relate to the business consulting and still get into the business talks and everything. But I'm very happy that as a numerologist today I'm sitting with you. And I wish you all the best to Abhishek in 2022. As I said, it would be a great year for you as well. And hope we keep meeting again in the 2022 and the years to come. Definitely. Thanks, Jhumaa. So thank you so much, friends. So as we heard everything about, not everything, few tips about number 4, few tips about number 1, few things about this rock salt. Thank you so much, Jhumaa. So friends, as we got a few tips about number 1, number 4 जो कि मैं हूँ, और इस rock salt के बारे में. Anyways, stay tuned guys, as Jhumaa stated that right intentions lead to right places. So अगर आपकी नीयत साफ है तो एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुँच जाएंगे. So ऐसे ही गेडी ऑन व्हील्स का सफर जारी रहेगा, अलग अलग मंजिलों तक आपको पहुँचाते रहेंगे हम और अलग अलग जगह दिखाते रहेंगे. Stay tuned with Gedi on Wheels.